And we just heard confirmation that Dragon has exited the keep-out sphere. Again, the keep-out sphere is an invisible 200-meter line centered on the space station. It's one of several safety zones set up to govern spacecraft arriving and departing from the International Space Station. While spacecraft are inside the keep-out sphere, they have to be configured where they would not cross into the imaginary boundary for at least 4 orbits, even if the spacecraft lost all maneuvering. The next major milestone for Dragon's departure will be exiting the approach ellipsoid. This is planned to take place about 13 minutes from now. Dragon, Station Houston on the Big Loop. Dragon has exited the keep-out sphere. Dragon copies. Station copies. Station looks beautiful. Dragon Grace, if we didn't have a shutter constraint, you could see us waving. All right, Grace copy. All right, look at that. That's a magical journey that's now coming to conclusion with Group Captain Shubhanshu Shukla, the axiom 4 mission pilot, returning to Earth after spending about 18 days Dragon in has total. Exited the keep-out sphere. The next major milestone for Dragon is crossing the approach ellipsoid. That will take place a little over 10 minutes from now. That approach ellipsoid is another imaginary shape similar to the keep-out sphere, but this time it's a 3-dimensional ellipsoid measuring 4 kilometers by 2 kilometers by 2 kilometers. And one of the key differences with the approach ellipsoid is that vehicles outside of it have to be on what we call a 24-hour safe free drift trajectory. This means the spacecraft would not cross into the approach ellipsoid for at least 24 hours, even if it lost all maneuvering. After the spacecraft crosses the approach ellipsoid, joint operations will end and responsibility for the spacecraft will be handed back to the SpaceX flight control team in Hawthorne, California. Again, everything continuing to look good with Dragon's departure today following a physical separation about 10 minutes ago at 6:15 a.m. Central, 7:15 a.m. Eastern. Dragon is now about 340 meters away from the International Space Station and continuing to increase that distance. And teams on the ground will continue to monitor the weather ahead of a splashdown tomorrow, Tuesday, July 15th at 5:31 a.m. Eastern off the coast of California. After Dragon exits the approach ellipsoid, there will be a couple of more departure burns and phasing burns to set the spacecraft up for the correct phasing and location for splashdown. And for those of you who are just joining us, the SpaceX Dragon spacecraft carrying the Axiom Mission 4 crew recently undocked from the International Space Station's Harmony module at 6:15 a.m. Central, 7:15 a.m. Eastern to complete an 18-day stay aboard the orbiting laboratory. Station Houston on the Big Loop. Johnny, please give Huntsville a call on Space to Ground 4. Dragon lifted off atop a Falcon 9 rocket on Wednesday, June 25th from Launch Complex 39A at NASA's Kennedy Space Center in Florida and docked to the space-facing port of the International Space Station's Harmony module after a 28-hour journey on Thursday, June 26th. During their stay aboard the International Space Station, the Axiom Mission 4 crew conducted more than 60 experiments, and they will now be returning to Earth with more than 580 pounds of science and hardware. This was the 4th private astronaut mission to the International Space Station enabled by NASA. And while Dragon and the Axiom Mission 4 crew continue their departure from station, and as we stand by for the approach ellipsoid exit in just under 10 minutes from now, let's go ahead and check back in with Jesse and John in Hawthorne. Thanks, Anna. We've got some great live views here. Previously, we didn't have any live views because we had a loss of signal, which is normal as we are passing by several ground stations. We're now passing over a ground station where we do have acquisition of signal and getting these great live views. Also, in your bottom right-hand corner, you can follow along with this new graphic and see the thrusters firing on Dragon on the forward bulkhead, as well as the telemetry in the bottom left-hand corner.
Now, as we mentioned earlier, Dragon is fully autonomous, which means it's capable of flying itself. Dragon was designed from the beginning for flying humans to space, even though its first missions carried only cargo. Now, before we could fly humans, our teams implemented a number of design upgrades to make sure that both Dragon and Falcon 9 are suitable for flying people, and then put both vehicles through thousands of tests to prove their safety. Now, prior to the Axiom Mission 4, SpaceX successfully completed 52 flights of Dragon to and from orbit since 2010, including 47 trips to the International Space Station. AX-4 is SpaceX's 18th human spaceflight mission, and before Axiom Mission 4, SpaceX had flown 66 crew members, meaning that this mission brings that count to 70. That's incredible. You know, missions like this are important milestones for everyone involved, from the crew members who fly to those that they represent, and to the host of scientists and engineers around the world who have an opportunity for their research or their technology to be tested in microgravity. Everyone learns from these missions. And for Axiom Space, this is at the heart of why we do these missions. We are building opportunities for others to advance what is possible and expand what is known. We want to enable every human everywhere to take part in this. Now, after a beautiful launch on June 25th, the AX-4 crew docked with the International Space Station a little over a day later, opening the hatch and greeting the Expedition 73 crew on June 26th. The crew shared some good words and a welcoming ceremony before quickly getting to work on their extensive itinerary. Now, each crew member brought with them a host of research, technology demonstrations, and outreach objectives, ranging from human physiology to space radiation impact studies, and even some gardening. Now, this crew maintained a very full timeline, but they prepared for this. Each crew member wanted to ensure that every minute of this mission was utilized well and that all objectives were hit. So Peggy, Shukla, Suave, and Tibor were ready to work. And over the course of 18 days on board the station, they accomplished over 60 research activities, as well as more than 20 outreach events. And as their time on station came to a close, the AX-4 crew participated in a brief farewell ceremony where they said their goodbyes to the Expedition 73 crew. Now, for more details on the incredible work performed by this crew on orbit, check out axiomspace.com. So that's the latest. The Dragon spacecraft has separated from the space station. Thruster findings have been nominal, driving Grace away from the space station and on board right now, returning from what clearly has been a landmark moment for India's space journey as well. Group Captain Shubhanshu Shukla undocking from the ISS, the International Space Station, and wraps up a historic 18-day mission that will now have the data and the discoveries analyzed as well as and when he returns. Remember, it's not that the mission is over. There will be, of course, findings that they will also be looking at. 22 hours, however, it will take for them to return to Earth. So what you're looking at right now, only by afternoon tomorrow, by about 12 p.m., we'll have them possibly entering into the Earth's surface. And then, of course, there will be quarantine as well for them. But remember, for all of us, it's a matter of pride, reflected glory. But the ones who have seen Shubhanshu through childhood, teenage, struggle and achievements is the family. And joining me right now, a proud father, Shambhu Shukla ji joining me. And this is where Lucknow city literally has lit up as well in pride and appreciation. शुक्ला जी, आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये पिछले 18 दिन आपके लिए भी बहुत क्रूशल रहे होंगे। इस वक्त के बारे में मुझे बताएं, जब वो वापस आने की ये तैयारी हो रही है, अभी एक दिन और है, क्या ये इमोशनल मोमेंट है फैमिली के लिए? किस तरह से इस स्पेसिफिक मोमेंट को आप देखते हैं? अब डॉकिंग के बाद बस यही हर समय दिमाग में रहेगा कि वो कितनी जल्दी जो है पृथ्वी पर आए और हम लोग उसकी जो है लैंडिंग देखें, बस यही दिमाग में है। तब से हम लोग यही उसी के बारे में बातें होती हैं, उसी के बारे में सोचते हैं और उसी के बारे में पूरा जिक्र होता रहता है। सभी फैमिली जो है उसका वापसी की रास्ता देख रहा। ये हमारे लिए बहुत ही जो है ऐसा क्षण है कि जो मतलब रोमांचक है, पर अभी जो है जब तक वापसी नहीं होती है तब तक जो है हम लोग उसी के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और आगे भी जो है समय को जो है देखते हैं कितनी जल्दी समय पार हो जाए और उसकी लैंडिंग मतलब यहाँ लैंडिंग हो जाए। ये बस यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। नहीं, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि अभी भी एक सेफ्टी प्रोसीजर्स रहते हैं और पिछले कुछ दिनों में आपके परिवार ने ज़रूर कहा कि प्रार्थनाएं जो हैं वो चल रही हैं। तो क्या ये पूछना ठीक होगा, सावन का सोमवार है,
कोई स्पेसिफिक प्रेयर्स परिवार की तरफ से, और एक बहुत ही शुभ मुहूर्त पर जो है उनका रिटर्न हो रहा है वापस धरती पर? हाँ, पूजा पाठ आज सावन का पहला सोमवार था, इसलिए शंकर जी के मंदिर में जाकर उनका अभिषेक करके उनसे प्रार्थना की कि मतलब हमारे बच्चे की जो है अच्छी तरह जो है वापसी हो, और घर पर भी अपना ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ और अच्छी तरह पूजा की है, सब कुछ किया है कि हमारी बच्चे की जो है वापसी अच्छी तरह हो। इसके लिए हम जो है ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं और सभी लोग दुआएं बच्चों को देते हैं, और पूरा देश बच्चे को दुआ दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे बच्चे को दुआ दिए हैं, और देशवासियों की तरफ से भी उन्होंने आशीर्वाद दिया है। ये हमारे बच्चे के लिए बहुत गौरव की बात है, और हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी को कोट कोट धन्यवाद करते हैं कि हमारे बच्चे का जो इतना सपोर्ट किया वो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। जी, प्रधानमंत्री से भी काफी देर तक बात हुई थी उनकी, और पूरा देश ही, सिर्फ परिवार नहीं शुक्ला जी, पूरा देश बहुत ही एक प्राइड फील करता है इस वक्त जब हम देखते हैं कि इंडिया का भी नाम, भारत का भी नाम इस वक्त स्पेस में आ रहा है। अब जब वो स्पेस में थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जब थे, अनडॉकिंग से पहले आपकी कोई बात हुई हो उनसे? अगर आप हमसे कुछ शेयर कर पाए इंडिया टुडे के व्यूअर्स के साथ, किस तरह से आपका इंटरेक्शन हो पाया शुभांशु के साथ? बातचीत हुई थी, कल बात हो गई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि अब मैं वापस हो रहा हूँ और अच्छी तरह आकर मिलता हूँ आप लोगों से, और अब इसके बाद कोई बात नहीं होगी। ये उन्होंने हमको बताया कि इस पे से आज हम सामान वामान सब इकट्ठा करके अपना जो है वापसी करेंगे, कल तैयारी कर रहे हैं उसकी, और अच्छी तरह वापस आकर फिर हम मिलते हैं आप लोगों से। कोई और डेस्टिनेशन हो धरती पर या स्पेस में ही क्यों ना हो, घर पे बताना बहुत ज़रूरी है कि पैकिंग हो गई है और निकल रहे हैं। पूरा देश उनके साथ है। शंभू शुक्ला जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, और चिंता ना करें, आई एम श्योर देयर आर बिलियन प्रेयर्स with Group Captain Shubhanshu Shukla right now. Let's also now bring in Mother Asha Shukla is joining me right now. आशा जी, किस तरह का माहौल है, किस तरह का मूड है अभी परिवार में? कुछ ही घंटे रह गए हैं और वापसी होगी आपके बेटे की, सुपुत्र की, अब वापस धरती पर। हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का क्षण है ये। हमारे लिए बेटे की खबर सुनकर कल से बहुत उत्साहित हूँ मैं कि कितनी जल्दी बेटा नीचे आए और नीचे आकर हम लोगों से बातचीत करें और मुलाकात करें। हम बहुत ज़्यादा हम लोग उत्साहित हैं इसके लिए। आशा जी, अगर एक माँ के नज़रिए से पूछूं तो क्या तैयारियां हो चुकी हैं? अभी तो कुछ वक्त लगेगा उनको आप तक आने में, पहुँचने में, क्वारंटीन रहेगा, लेकिन खान पान की उनकी फेवरेट जो डिश होगी, कोई फेवरेट डिश जो आप तैयार करने के लिए रेडी हैं अभी जब वो आएंगे वापस? अब बेटे को जो खाएंगे वो बना के खिलाएंगे। अपने आप में जो चीज़ वो पसंद करेगा वो बस उसके हाँ करने की देरी है ना। इस समस्या तो ये है कि वो कुछ खाते नहीं है, जो हाँ करेंगे वो तुरंत बना के खिलाएंगे। आशा जी, एक चीज़ हमें ज़रूर बताइए, देखिए हम सबके लिए प्राइड है क्योंकि एक भारतीय है वहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, लेकिन एक माँ के लिए जिन्होंने पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया बच्चे को, पूरा उनका स्ट्रगल भी देखा होगा पढ़ाई के वक्त और जब उन्होंने फोर्स ज्वाइन की, तो आज माँ का दिल क्या कह रहा है? माँ किस तरह से देख रही है जब ये रिटर्न हो रहा है? इमोशनल तो हूँ। उस दिन जिस दिन लैंड किए यहाँ से गए थे उस दिन बहुत ज़्यादा इमोशन था, लेकिन आज वापस आने में खुशी ज़्यादा हो रही है कि कल बेटा मेरा नीचे आएगा तो हम लोगों से मिलेगा, बातचीत करेगा आके नीचे उतर के। आपकी लास्ट बात कब हुई होगी? क्या अभी जब वो ISS पे थे, जैसे शुक्ला जी से बात हुई, क्या आपका भी कोई इंटरेक्शन हुआ बेटे के साथ? आशा जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, तो आपका कोई इंटरेक्शन हो पाया था उनसे, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से, जब वो ISS पे थे, स्पेस स्टेशन पे थे? बातचीत यही करी कि अब कल हुई थी दोपहर में बात, तो कह रहे थे कि मैं यहाँ पैकिंग कर रहा हूँ, अब यह आखिरी बात है, इसके बाद बात नहीं होगी, आने के बाद ही बात होगी। और सब बढ़िया है यहाँ पे, सब अच्छा है, बहुत मैं खुश हूँ, बहुत एंजॉय किया, पार्टी की हम लोगों ने यहाँ पे मिलके, सब लोगों ने, हमारी फेयरवेल हुई, हमने कहा बहुत अच्छा, तो फिर सारी बातें शेयर की उसने हमारे साथ में कल। तो जब आपकी बातचीत हुई होगी, क्या उन्होंने कुछ आपको वीडियो पे या कुछ ऐसे सीन्स दिखा सके, स्पेस कैसा दिख रहा है, भारत और धरती कैसी दिखती है, ऐसा कोई इंटरेक्शन हुआ होगा अगर मैं पूछ सकूं आपसे?
बहुत बढ़िया लगा। पृथ्वी का नज़ारा उन्होंने दिखाया, वहाँ से सूर्योदय दिखाया, वहाँ से सब कुछ दिखाया। एक एक चीज़ स्पेस के अंदर की दिखाई उन्होंने, घूम घूम के यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सब कुछ दिखाया। बहुत अच्छा लगा देख के। हमने 1984 में जब सुना था पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से, जब राकेश शर्मा ने कहा था सारे जहां से अच्छा, आज वही चीज आपका बेटा 2025 में फिर रिपीट कर रहा है। तो उस वक्त किस तरह से इमोशन, आपने तो तब भी देखा होगा, कुछ ही टीवी थे और कितना वो वाइडली वायरल था, और आज शुभांशु शुक्ला ने वही लाइन स्पेस से बोली। मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है ये सुन के कि जब बेटे के मुंह से बात सुनती हूँ कि सबसे अच्छा है भारत देश, जहाँ से प्यारा है। बहुत अच्छा लगता है सुन के। है ही भारत इतना अच्छा, तो वो भी सभी कहते हैं, तो अच्छी बात है। उसके मुंह से सुन के और अच्छा लगा। एक माँ का गर्व समझ मैं बिल्कुल सकती हूँ। किस तरह से इतनी मेहनत आपकी भी लगी होगी इतने साल अपने बेटे के लिए। तो जब शुभांशु शुक्ला ने ये शेयर किया कि प्रधानमंत्री मोदी से भी बातचीत हुई, काफ़ी लंबी बातचीत हुई, तो उस वक्त भी आपको एक खुशी का कुछ माहौल था घर पे कि इतना लंबा इंटरेक्शन हो पाया आपके बेटे के साथ? पीएम मोदी से तो जब बात हुई थी तो उनकी भी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत प्राउड फील हुआ कि मोदी जी ने हमारे बच्चे को खूब आशीर्वाद दिया और खूब अच्छे से बात की उनसे, सारी बातें शेयर की उन्होंने और सब कुछ कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हो तुम शुभांशु को शुभ नाम से भी बुलाया उन्होंने। अच्छा। और तो बहुत सुन के अच्छा लगा। कहने लगे तुम्हारे नाम में तो शुभ जुड़ा हुआ है, तो सब शुभ होना ही होना है ऐसे कहा, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। आशा जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और अभी एक दिन और है उनके रिटर्न के लिए। आई एम श्योर बहुत प्रेयर्स भी चल रही होंगी, लेकिन जहां शुभांशु शुक्ला का मेरिट है, हार्डवर्क है, उनके माता पिता को भी हम याद रखें। उनकी जो मेहनत रही है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की पढ़ाई में, तैयारी में और अब सक्सेस में एज वेल। सो दैट्स द शुक्ला फैमिली फ्रॉम लखनऊ स्पीकिंग टू इंडिया टुडे एज एंड व्हेन दिस अनडॉकिंग इज टेकिंग प्लेस। Joining me, our science editor Sibu Kumar Tripathi for the latest on that. Sibu, you've been tracking ever since this was in the works and now it's coming to conclusion. But tell me, as the viewer must be wondering, it takes 22 hours, approximately one full day for the crew to return. What is this process like? And tell us about the protocols being followed. So Pooja, at the moment the spacecraft is flying at about 400 kilometers above the planet. It recently undocked from the space station. It was a picture-perfect undock that was conducted by SpaceX and NASA teams. The Dragon spacecraft is completely autonomous, so there will be no human intervention in the spacecraft in the entire flight trajectory. For the next 22 hours, it will be in a flying position. It will be rendezvousing with the planet, aligning for that critical re-entry into the Earth's atmosphere. Tomorrow at about 3 p.m. is when we are expecting the splashdown to happen. Now the 22-hour long journey is important because the first of all today the spacecraft will have to move away from the space station. Now these are done in a phased manner. So in multiple phases the mini engines on the Dragon spacecraft will fire up. They'll be activated and will push the Dragon spacecraft away from the International Space Station and gaining its own speed. Tomorrow is when the trunk of the Dragon spacecraft will be removed. Now the trunk is the outer part of the space station which has the solar panels which were charging the entire spacecraft. After that, it will be on internal power, on autonomous flying, and then the re-entry will happen tomorrow at around 2 o'clock is when we are expecting the re-entry into the Earth's atmosphere to happen. Now this re-entry in itself is highly challenging. Because of the friction in the atmosphere, a plasma buildup happens and there will be a brief loss of communication between the spacecraft and the NASA and the SpaceX team here on the ground. Once that loss of communication is achieved, once that time period is over, they'll come back into communication phase, and then that's when the drogue parachutes will kick off and the Dragon spacecraft will be slowed down for that picture-perfect splashdown in the Pacific Ocean. So for the next 22 hours, it's going to be jam-packed flying for the 4 astronauts. They have completed over 250 orbits of the Earth when they were on the space station for the last 18 days. They have conducted over 60 experiments across 31 countries. So overall, this has been a highly successful mission for not just India, but for 31 countries across the world. This was a collaborative mission between NASA, SpaceX, ISRO, and the Axiom Space, and we are finally into that last phase when the mission is going to conclude tomorrow. Stay on with me, Sibu, stay on with me, because this Axiom 4 mission has Commander Peggy Whitson from the USA,
Saoz Oznaki from Poland, Tibor Kapu from Hungary, and India's Group Captain Shubhanshu Shukla undocking from the space station. A collaboration in many ways where India has also made a mark. And remember, this is what a huge leap this has been. Now, for my generation, Rakesh Sharma's statement was from the history books, that is what he said from space to the former Prime Minister Indira Gandhi. And this time, watching it in real time for us, Group Captain Shubhanshu Shukla evoking and reiterating that statement of Sare Jahan Se Acha. Let's listen into that. ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। So remember that it will take about 22 hours for the crew to re-enter into the Earth's atmosphere, and then as and when they arrive, there will be quarantine for a while, and then the findings that they managed to get from the International Space Station will also be then analyzed. There will be several aspects to it. For example, how possibly with regard to life, especially plants and more flora and fauna, that can develop, and other aspects as well. So we'll be waiting for those details. But what a moment right now. Congratulations to the crew, and 22 hours. Stay tuned to India Today as we continue to bring you all the developments.